अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कनाडा का मकबूल तरीन टेलीविजन प्राइम कैनेडा टीवी और प्रोग्राम कनाडा हाइलाइट्स के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद उमर खान। नाज़रीन, आप जानते हैं कि कनाडा में अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं और इलेक्शन के बाद अब पार्टी तो वही जीती है जो 2 दफा अपने आप को इक्तदार में लेकर आ चुकी है, यानी लिबरल्स, और प्लस ये कि जस्टिन ट्रूडो एक मरतबा फिर वजीर आजम की सूरत में हमें दिखाई दे रहे हैं और मजीद अपना टेन्योर पूरा करेंगे। लेकिन मजीद जो उन सियासी हालात पर तब्दीली और जो फैसले तय किए जा रहे हैं उस पर आपको बताएंगे। लेकिन आज कनाडा हाईलाइट की जो हमारी पहली स्टोरी है वो पाकिस्तानी हाई कमीशन के हवाले से है और उसमें आपको मैं बताना चाहता हूं कि कनाडा पाकिस्तान ग्लोबल कांग्रेस, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है CPGC के नाम से, और इसके एक वफ्द ने कनाडा में पाकिस्तान के नामजद हाई कमिश्नर अमीर खुर्रम राठौर से मुलाकात की है, जिसमें 2 तरफा तिजारत में इजाफे के साथ साथ मुताले के इजाजत नामों यानी स्टडी वीजा के हवाले से भी बात हुई और कैनेडियन तालीमी इदारों में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के इंदराज से मुतालिक दीगर उमूर पर तबादला ख्याल हुआ है। स्टूडेंट्स डायरेक्ट स्ट्रीम SDS के नाम से ये एक पूरा प्रोजेक्ट है और ये एक मंसूबा है और इसी में जो है वो चाहते हैं कि मजीद आगे पेशरफ्त हो। इस मुलाकात के दौरान हाई कमिश्नर ने CPGC के डायरेक्टर्स जो इस वक्त में शामिल थे उनके साथ उन्होंने इस वक्त में जो गुफ्तगू की है उसमें उन्हें एक रोशन राह दिखाई है और साथ ही CPGC में जो उनके दोनों डायरेक्टर्स और वकालत और मुशावरत के जरिए पाकिस्तानी नौजवानों में बेदारी पैदा करने की कोशिशों में हिस्सा लेने की तजावीज थी, उनका भी खैर मकदम किया है, क्योंकि SDS स्कीम एक फायदेमंद स्कीम थी और मजीद इसको आगे परवान चढ़ना भी चाहिए और अमीर खुर्रम राठौर भी इस बात पर कायल है। कनाडा और पाकिस्तान दोनों के लिए मजहबी जो फेस्टिवल्स होते हैं उसके हवाले से भी वीजों पर गुफ्तगू हुई और उसमें जो मसाइल आते हैं उसका मसला हल करने पर भी जोर दिया गया। हाई कमिश्नर ने सिख यात्रियों का भी जिक्र किया और कहा कि उनकी मदद के लिए भी हम मुकम्मल ताउन करेंगे, यानी कनाडा में रहने वाले जो सिख हमारे भाई हैं उनको अगर करतारपुर आना है और उसमें अगर पाकिस्तानी वीजे की उनको नीड होती है तो उसमें भी हाई कमीशन अपना रोल प्ले करेगा, क्योंकि मजहबी मज़ारात हों, जियारतें हों या इस किस्म का जो भी मामला होता है ये बड़ा एक अहम मामला होता है और इससे एक डिप्लोमेसी का फेज भी शुरू होता है। लिहाजा ये जो मुलाकात हुई वफ्द की सतह पे CPGC के यानी कनाडा पाकिस्तान ग्लोबल कांग्रेस के वक्त से जो मुलाकात हुई बड़ी खुश आइंद मुलाकात रही और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के हवाले से भी बेहतर रही ये मुलाकात, और साथ ही जो लोग मजहबी बुनियादों पे वीजा हासिल करने चाहते हैं और जो उनमें मसाइल दरपेश होते हैं उस पर भी गुफ्तगू हुई। अब हम कनाडा हाईलाइट में जो सेकंड स्टोरी आपके सामने रख रहे हैं वो आज का हमारा खास मौजू है और वो है कनाडा के इलेक्शंस और उसके बाद अक़लियती हुकूमत का कयाम होना, क्योंकि जीत के बाद वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो पार्लियामेंट के नए सेशन के लिए अपनी नई काबीना बनाने की तैयारी में है। नई काबीना का अब क्या कंपोजिशन होगा, कैसे बनाई जाएगी, लेकिन मुमकिन तौर पे नई जो काबीना है उसमें इसी इलेक्शन में जो अल्बर्टा से मुंतखब होने वाले 2 अरकान पार्लियामेंट हैं वो इसका हिस्सा होंगे। 2 सालों में पहली बार इस सूबे में पार्टी की नुमाइंदगी की जाएगी और हतमी तौर पे इंतखाबी नताइज ने कुछ खवातीन वुज़रा को नक्शे से हटा दिया है, यानी अब वो इस पोजीशन पर नहीं है कि वो कैबिनेट का हिस्सा बन सकें। लेकिन जस्टिन ट्रूडो हमेशा ये चाहते हैं कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना हो और खवातीन के साथ वो अपनी काबीना के अंदर सनफी बराबरी के मकासद को दोबारा से कायम रखें और उसका वो इरादा भी रखते हैं। देखना ये कि मुमकिन तौर पर अब ये काबीना किस तरीके से मुरतब होगी, इसका इंतखाब कैसे होगा, लेकिन जस्टिन ट्रूडो लोगों को सिलेक्ट करने के मामले में बहुत ज्यादा माहिर है। वो ये जानते हैं कि किसको किस पोजीशन पर लाना है, किस तरह लाना है और उसकी अहलियत और उसकी क्वालिटीज, स्किल्स और काबिलियत की बुनियाद पर कनाडा को उससे क्या फायदा दिलवाना है, ये जस्टिन ट्रूडो का बुनियादी मकसद होता है। Pleasure to be back in Calgary. Because it's 2015. Now, with all 18 male incumbent ministers re-elected, and with the 2 additions from Alberta, you've got a cabinet that could have as many as 20 men. But only 14 returning ministers are women. So Trudeau will need as many as 6 fresh female faces in cabinet to achieve gender parity. One sure bet, Lena Diab from Halifax West. She's the only female Liberal MP for Nova Scotia, and she's a former Justice Minister from that province. Ariel Kayabaga for being here. Another likely pick in London West, Ariel Kayabaga, a member of London City Council. She is bilingual and, as a black woman, would help Trudeau increase the diversity in his cabinet. Home to the Liberals again. Other possibilities, Leah Taylor-Roy, a Harvard-trained consultant just elected in Aurora Oak Ridge's Richmond Hill, or Helena Jasmine,
Isaac, a former Ontario health minister, re-elected in Markham Stouffville, or Kamal Khera, a nurse, re-elected in Brampton West. इन्हीं इलेक्शन के हवाले से आज हमारी जो थर्ड स्टोरी है कनाडा हाईलाइट की, वो ग्रीन पार्टी से मुताल्लिक है। ग्रीन पार्टी लीडर एनएम पॉल एक और इंतखाबी शिकस्त और कई महीनों की जो उनके अंदरूनी पार्टी के जो मसाइल थे, उसके बाद एक इंसान डिसहार्ट भी हो जाता है, हौसला खो देता है। लेकिन फिलहाल उन्होंने अपनी इस पोजीशन से ओहदा छोड़ने का ना सिर्फ फैसला किया बल्कि छोड़ दिया। पॉल ने अपने वक्त को बतौर लीडर जबरदस्त जद्दोजहद का वक्त करार दिया। फिलहाल उन्होंने ग्रीन पार्टी की लीडरशिप से रिजाइन कर दिया है और यह तस्लीम किया है कि ग्रीन्स इंतखाबात में अच्छा काम नहीं कर सके। यानी अगर एक अच्छी कैंपेन चलती तो उन्हें उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं कोई पोजीशन बनाते, लेकिन पॉल अपनी पोजीशन भी नहीं बना सके। पॉल ने पीर की सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि उनके लिए इस वक्त पूरी जिंदगी का ये अहम मौका है, लेकिन वो इसे एक बदतरीन दौर भी समझती हैं। पॉल का इस्तीफा उस वक्त आया जब वो अपने टोरंटो सेंटर में चौथी पोजीशन हासिल करने के बाद लिबरल जो मार्सीलैंड के पीछे सवार थी, तो उन्होंने कहा कि इस पोजीशन में वो अपनी लीडरशिप को बतौर एक पार्टी हेड के मजीद आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहेंगी। उन्होंने कहा कि 2020 के ज़िमनी इंतखाब में भी शिकस्त हुई थी, जिसमें मुंतखब होना उनके किरदार में और उनके पॉलिटिकल करियर में एक बड़ा मुश्किल मरहला था। इस वक्त जो चीज उन्हें समझ में आई वो ये थी कि एक ऐसे वक्त में जब पार्टी के अंदरूनी मसाइल चल रहे हों तो यकीनी तौर पे बाहर के मसलों में रुकावटें मजीद पैदा हो जाती हैं और फिर पार्टीज को ये प्रॉब्लम होती है। 54% वोटों के साथ क़यादत ले लेना और पहली सियाफाम कैनेडियन और यहूदी खातून वो बन गई थी, लेकिन उन्होंने एक विफाकी पार्टी की सरबराही भी की और अब चूंकि वो एक ऐसे मौके पर आन पहुंची कि वो अपनी लीडरशिप को खुद बेहतर नहीं समझ रही, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। And then on Saturday night, only a few days after the election, there was an announcement sent to all of the members, including myself, that a leadership review had been launched. And when I received those two things, at the time that I received them, I just asked myself whether this is something that I wanted to continue, whether I was willing to continue to put up with the attacks I knew would be coming, whether to continue to have to fight and struggle just to fulfill my democratically elected role as leader of this party. And I just don't have the heart for it. The election was very difficult for those who have been following. They will know that, and it doesn't take a rocket scientist to know that when you head into an election without funding for your campaign, when you head into an election without the staff to staff your campaign, when you head into an election without a national campaign manager, when you head into an election being again under the threat of a court process from your party, it's going to be very hard to convince people to vote for your party. And so there are those who will ask, why did I choose to go ahead in any case? And I can tell you that it was a tremendous struggle to decide to continue. I knew that we were likely not going to do well, and I knew that as the leader, even without those tools that I needed, the first person that the public would look at would be me. But I chose to continue because of some of the people that are standing here today. The extraordinary members of the Green Party who didn't do anything to deserve this and deserve to have the opportunity for a good election. The candidates, the candidates and the volunteers again who deserve to have a leader going into the election and deserve to at least have an opportunity to be represented. Many of those candidates were candidates that I had recruited through the Time to Run program. It was the most diverse slate of candidates that we had, even though it wasn't a full slate. And so I felt that responsibility. I also felt a responsibility, to show that someone like me could get as far as I could, and that I could draw on wells of strength, much of it coming from, again, the people who are here today and others, to at least get across that finish line. Because when I talked in the debate about that crawling over that glass,
What people need to realize is that when I was elected and put in this role, I was breaking a glass ceiling. What I didn't realize at the time is that I was breaking a glass ceiling that was going to fall on my head and leave a lot of shards of glass that I was going to have to crawl over, throughout my time as a leader. And when I arrived at that debate stage, I had crawled over that glass, I was spitting up blood, but I was determined to be there. I was determined to be there so that the next time someone like me thinks of running and wonders whether it's possible to be on that stage, they will know that it is possible to do that. And so those are the reasons that I continued. Those are the reasons that I don't have any regrets about having gone through the election. But I do have to recognize that it is quite clear to me that I am not going to have the opportunity to lead. I have not been given that opportunity, and I will not be given that opportunity. I just will not spend any more time focused on political games as opposed to public policy, which is what I entered politics for in the first place, particularly at a time when it is so needed. We have a climate crisis that we have got to address collectively. We have people who are counting on us to ensure that we have more progressive policies that leave them better protected. And none of those things can be accomplished if the focus is solely on these kind of internal political issues. And so I will definitely find other ways to serve. This was always about service, and I have been outside of politics for most of my life, and so I know that there are other ways to serve. And for all of those people who are disappointed, for all of the supporters who wrote and asked me to please continue, please know that this was not easy. It has been extremely painful. It has been the worst period in my life in many respects, but I am not alone and you are not alone. We need to see the quest towards equity and justice as a relay race as opposed to a one-person race. And so someone like me, we take the baton and we take it as far as we can. And when our strength fails us, what we are counting on is that there is someone else who can take that baton from us and move us a little bit further down the line so that we can ultimately cross that finish line. And I promise you that we will cross that finish line. Alors, à tous les supporters, à toutes les personnes qui m'ont encouragé de continuer, je dis que je vais continuer à servir. C'était toujours le service pour moi, c'était toujours de participer dans la création des politiques progressistes. C'était toujours participer dans la lutte contre la crise climatique. C'était toujours d'essayer de créer une culture plus diverse, plus inclusive dans notre culture politique. Et je vais continuer à participer dans tous ces efforts. Mais je dis que ça suffit et je n'ai pas la force de continuer de me subir à les attaques dans notre parti, les attaques de la part de nos conseillers, des anciens chefs de notre parti aussi sur notre conseil. Ce n'est pas la raison que j'ai décidé d'entrer dans la vie politique et c'est le moment d'aller dans une autre direction. And so for those Green Party members, and there are many, because I have met some of the very best people in my life through the Green Party, I want to say that there is a struggle that is going on for the soul of the party. For those of you that want to see the Green Party fulfill its promise and its values, then there is work to do. And for those Green Party members who have taken great pleasure in attacking me, in calling for assaults against me, in calling for organization against me, in suggesting that I'm part of a conspiracy against the party, you may take small comfort in this for a moment, but please know that there are many more people like me than there are you, and you will not succeed in the end. You will not succeed in the end. And I will look to those other people to take up the baton and to move the party in the direction that I still believe that it can go in.
I want to thank my husband very much and my son very much and my family very, very much for sticking with me through this. It has been hard on all of us for a very long time. And no one can do this alone. And I want to send all my love to all the people who are standing behind the cameras and those in other parts of the country who have made it possible for me to last as long as I have. I think that's it. There certainly will be more in the days to come, but I wanted to provide this clarity, particularly in light of the leadership review that was called for yesterday. So that we can begin to move toward the next stage, and certainly so that I can also begin to move towards the next stage. Merci beaucoup. Thank you very much. कनाडा हाईलाइट की आज की चौथी स्टोरी कनाडा के 44वें इलेक्शन के हवाले से ही है, जिसके बाद मरकजी विफाकी जमातें और इसमें शामिल पीपल्स पार्टी ऑफ कनाडा पीपीसी इसके असरात का तयन करने की अब कोशिश कर रही है। पीपीसी ये जानना चाह रही है कि उसने कोई भी नशिस्त क्यों नहीं जीती। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 8,20,000 कैनेडियंस ने पीपीसी उम्मीदवारों को वोट दिया। ये उस तादाद से 2 गुना ज्यादा है जिसने ग्रीन पार्टी के उम्मीदवारों को वोट दिया। पीपीसी जो 8 राइडिंग्स में दूसरे नंबर पर है, यानी अगर देखा जाए तो इस मुकाबले में 8 ऐसे मकामात हैं, 8 ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहां पर वो दूसरे नंबर पर रही, और ज्यादातर मैनिटोबा, सस्केचुवान, अल्बर्टा ये देही इलाके माने जाते हैं। और ये भी बताया गया है पीपीसी के हवाले से कि वोट महज नापसंदीदा कंजर्वेटिव से कहीं ज्यादा पर मुश्तमिल थे, यानी कंजर्वेटिव से भी कुछ जगहों पे इन्हें ज्यादा वोट मिले, लेकिन फिर भी ये सेकंड पोजीशन पे रहे। कहने का मकसद ये है कि पीपीसी अपनी इस शिकस्त को कि हम कोई सीट क्यों नहीं हासिल कर सके उसमें गौर खौस कर रही है। वो भी अपनी पार्टी के अंदर इस्लाहात लाने की कोशिशें कर रहे हैं, ना सिर्फ कोशिशें कर रहे हैं बल्कि वो ये देखना चाह रहे हैं कि आगे का उनका लाएअमल क्या होगा। Angry protesters at Justin Trudeau rallies, many from the People's Party of Canada, or the PPC. And Conservatives were clearly worried the PPC was stealing their votes. The Conservatives did bleed some support to the PPC, but not indeed. Internal Conservative polls said as many as 25% of PPC voters this year cast a ballot in 2019 for the Green Party. And like many Green voters, the PPC vote was seen as a protest. This year was the same as 2019, anti-immigrant, anti-foreign aid, anti-CBC, and so on. But the galvanizing force this year was opposition to public health restrictions, and their target was not just Justin Trudeau, but anyone in power. कनाडा हाईलाइट की 5वीं स्टोरी जो है तो इलेक्शन से ही मुतालिक, लेकिन इसमें इस्लामोफोबिया का जिक्र शामिल है, क्योंकि मुस्तफा फारूक जो कि सीईओ हैं नेशनल काउंसिल फॉर कैनेडियन मुस्लिम के, उनकी जानिब से बताया गया कि पूरे इलेक्शन के दौरान हम मुताबिक जमातों के मुस्बत वादों को देखकर खुश हुए, और बहैसियत मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के उन्होंने कहा कि अब हम इनको पूरा होते हुए देखना चाहते हैं, यानी अब हम मुंतजिर हैं कि जो वादे हमसे किए गए हैं वो पूरे हों। बिलखुसूस लिबरल्स की तरफ उनका इशारा था, क्योंकि लिबरल्स अब हुकूमत में हैं। लिबरल्स ने वादा किया कि वो 2022 तक नफरत से निपटने के लिए एक नेशनल एक्शन प्लान तरतीब देंगे, जिसमें इस्लामोफोबिया समिट की सिफारिशात भी शामिल होंगी। हम हुकूमत के साथ इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम करने के मुंतजिर हैं कि किए गए वादे इस्लामोफोबिया को खत्म करने के लिए नफरत के सपोर्ट फंड्स के एक कौमी शिकार को और अफगानिस्तान से आने वाले मजीद पनाह गुज़ीनों को नफरत के खिलाफ जंग के पीछे वसाइल डालने के लिए जो लोग कार फरमा होते हैं, इन सब मामलों पे हुकूमत गौर व खौस करेगी। ये बात मुस्तफा फारूक ने, सीईओ नेशनल काउंसिल फॉर कैनेडियन मुस्लिम ने कही, और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास इस जिंदगी में बहुत कीमती वक्त है और हमें इस जो सिस्टम है उसको तब्दील करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि सब कुछ सिर्फ कहने की बातें नहीं है, इस पर अमल दरामद होना जरूरी है, लेकिन हुकूमत के बगैर ये मुमकिन नहीं कि इस पर इंप्लीमेंटेशन हो सके। उन्होंने ये भी कहा कि हम ये जानते हैं कि कितनी पॉलिसीज पर अमल हुआ, और हमें याद रखना होगा कि दुनिया बदल रही है, लिहाजा कनाडा को भी इस एक्सट्रीमिस्ट सिस्टम से निकलना होगा। जहां पे इस्लामोफोबिया का मामला है, वहां इस्लाम के तमद्दुन को बरकरार रखने के लिए इस्लामोफोबिया का खात्मा जरूरी है। कम्युनिटीज के दरमियान आपस में हमआहंगी भी जरूरी है, क्योंकि एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब हमें अपनी जिंदगियों के भी जवाब देने हैं। उन्होंने कहा कि इस इलेक्शन में हमारा एक मकसद ये था कि जो आज भी हमारे सामने है, और वो है एहतसाब, कि हमने कैनेडियन मुस्लिम वोट के साथ मिलकर अपनी जानिब से ये इरादा अपनाया है कि हर जगह एहतसाब के मामले को बरकरार रखा जाए।
انہوں نے کہا کہ ہماری رضاکار ٹیموں نے مل کر ملک بھر میں ووٹ حاصل کرنے کے لیے ناقابل یقین حد تک سخت محنت کی اور درجنوں کمیونٹی تقریبات میں شرکت سے لے کر 80 سے زائد مقامی مساجد کی زیارت کرنے اور 10,000 سے زیادہ فون کال کرنے تک ہماری مہم بغیر کسی مدد کے کامیاب نہ ہوتی اگر ہم سب مل کر یہ کوششیں نہ کرتے. لہٰذا انہوں نے اپنے والنٹیئرز کا بھی شکریہ ادا کیا. اپنی میڈیا کیمپین کو بھی انہوں نے کہا کہ یہ ایک بہترین کیمپین تھی اور اس امید کا انہوں نے اظہار کیا کہ اسلاموفوبیا کے خلاف جو اب کردار ادا کرنا ہے اس مائنورٹی کی گورنمنٹ نے وہ ہونا چاہیے, وہ وعدے پورے ہونے چاہیے. اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ کینیڈا میں جو اسکول جانے والے بچے ہیں ان کے لیے کیا نئی ہدایات اور کیا نیا معاملہ سامنے آیا, کیونکہ پورے کینیڈا میں کنڈر گارٹن سے گریڈ 12 تک یعنی کے جی سے لے کر 12ویں جماعت تک کے طلبہ کچھ ہفتوں سے کلاس میں واپس آئے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مکمل طور پر معمول پر آ جائیں گے, کیونکہ کچھ اسکول طلبہ اور عملے میں کووڈ-19 پھیلنے کی اطلاع دے رہے ہیں. یعنی یہ جب واپس ریوائیو ہوئے بچے دوبارہ آئے اسکول تو دوبارہ سے کووڈ نے سر اٹھا لیا ہے. اگرچہ ہر صوبہ اور ہر علاقہ اس وبا کی اصطلاح کو مختلف طریقے سے متعین کرتا ہے, یعنی سب اپنے اپنے ڈومین میں بتا رہے ہیں کہ جی کووڈ ان کے لیے کتنا نقصان دہ ہے, کیا پرسنٹیج وہاں پر ہے. لیکن ایسے منصوبے جاری کیے جانے چاہیے, ایسی SOPs پر عمل درآمد ضرور ہونا چاہیے جس سے یہ بات واضح ہو کہ پبلک ہیلتھ کے افسران اسکولوں کے ان تمام تر معاملے کو جو اسکولوں میں کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں اس کو سنبھالنے میں مدد بھی فراہم کریں اور لوگوں کو بھی, وہاں کی انتظامیہ کو بھی یہ باور کروائیں کہ وہ کس طریقے سے بچوں اور اپنے اسٹاف کی صحت کو ممکن بنا سکتے ہیں. مونٹریال چلڈرن اسپتال کے پیڈیاٹرک متعدی امراض کے ماہر ڈاکٹر جیسی پیپیگن برگ نے کہا ہے کہ اسکول کے حساب سے اسکول کے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے جو دستیاب معلومات کی بنیاد پر ہی ممکن ہے کہ وہاں کتنے بچے ہیں, کلاس روم میں کتنا اسپیس ہے, وینٹیلیشن کا کیا سسٹم ہے, ماسک پہنا جا رہا ہے, ہینڈ سینیٹائز ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے, فاصلہ کتنا رکھا جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں اسکول کے حساب سے دیکھی جائیں گی. پیپنبرگ نے یہ بھی کہا کہ جو کیسز ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہ کتنے افراد کو متاثر کر رہے ہیں اور کس حد تک متاثر کر رہے ہیں. بہت سے اسٹاف کے ممبران ویکسینیٹڈ ہیں, وہ کتنا اس سے متاثر ہو رہے ہیں, اور بچوں کے حوالے سے بھی ابھی فیصلہ باقی ہے کہ یہ بچے بھی آگے چل کے ویکسینیشن کا سرکل میں آئیں گے, ویکسینیشن کروائیں گے. تو اس وقت یہ دیکھنا اور سمجھنا ضروری ہے کہ کووڈ کتنا اثر کس پر ڈال رہا ہے, اسکول کا کیا پروٹوکول ہے, مینجمنٹ کس طریقے سے اس کو لے کر چل رہی ہے, اور ایک اسکول سے دوسرے اسکول میں اگر یہ کیسز پھیل رہے ہیں تو اس پر بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ٹرانسپورٹیشن یا کوئی دوسرا اس میں ذریعہ بن رہا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ بچے آپس میں گھل مل رہے ہوں, ایک بچے سے دوسرے بچے میں ٹرانسفر ہو رہا اور پھر ایک پورا بچہ پورے اسکول کو اس مرض میں یعنی اس وبا میں, اس کووڈ وائرس میں ان کا شکار بنا رہا ہو. اور یہ تب ممکن ہے کہ جب اس پر پبلک ہیلتھ آفیسرز, اسکول انتظامیہ اور انتظامیہ جو گورنمنٹ چلانے کے لوگ ہیں وہ سب مل کر اس پر بیٹھ کر کوئی SOP اور لائے عمل طے کر سکیں. اور اب کینیڈا ہائلائٹ کی لاسٹ سٹوری جو کہ کینیڈا اور چائنا کے درمیان بگڑتے ہوئے کشیدہ صورتحال اور حالات اور رشتے پر مبنی ہے کہ یہ ریلیشن شپ چائنا اور کینیڈا کے درمیان خراب ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, کیونکہ کینیڈین مائیکل اسپاو اور مائیکل کوورک, یہ دونوں مائیکلز جو کہ رہائی کے بعد چین نے یہ اصرار کیا کہ جو ہواوے کے CFO مینگ وانز ہیں اب ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. چین میں 1000 دن سے زیادہ قید کے بعد 2 مائیکلز کو چند روز قبل رہا کیا گیا تھا, صرف چند گھنٹوں بعد جب مینگ نے امریکہ کے ساتھ ایک درخواست کا معاہدہ کیا تھا اور برٹش کولمبیا میں اس کی حوالگی کا معاملہ ختم ہوا تھا. اور یہ بھی بتایا گیا ایک رپورٹ کے ذریعے کہ کینیڈا اور چین کے تعلقات کا پیچیدہ راستہ اب بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, کیونکہ یرغمال سفارتکاری پر خدشات باقی ہیں. چائنا اور کینیڈا اور اس پورے ریلیشن شپ میں US کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے, اور اس تمام تر معاملے کے اندر جہاں سے معاملہ بگاڑ کا شکار ہوا کہ جب چین میں 1000 دن سے زیادہ قید کے بعد یہ دونوں مائیکلز جو کہ چند روز قبل رہا ہوئے ہیں, اور ان کے قید ہونے کے پیچھے جو معاملات تھے اور اس کے ریئیکشن میں جو کچھ ہوا اس پر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ چائنا اور کینیڈا کے درمیان مزید بزنس ریلیشن شپ بھی اور سفارتکاری کے معاملوں میں بھی اب وہ والے معاملات یعنی فلیکسیبلٹی دکھائی نہیں دے گی.
家方本来就不应该。 Canada should learn a lesson, said China's foreign ministry spokesperson Monday, and not do dirty work for the U.S. Kovrig and Michael Spavor, even though the two planes carrying everyone home in opposite directions were in the air at the same time after more than a 1,000-day dispute. The White House also bristled at the suggestion what happened was a prisoner swap table, a guarantee Justin Trudeau would attend at the opening ceremonies of the upcoming Beijing Olympics, or even approval of Huawei's 5G network, a decision yet to be finalized. While experts may not agree on the best approach going forward with China, they agree the most important thing for now. तो आज कनाडा हाईलाइट से फिलहाल इतना ही। कनाडा से मुतालिक आपको कोई भी खबर जाननी हो तो देखते रहिए प्राइम कनाडा टीवी। मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।